Good afternoon, everyone. Very good afternoon, and welcome to today's magic book session. Very good afternoon. So it is about 4 Good o'clock. afternoon, We Annie. will start at 4 o'clock. Till then, please turn on your videos. आप सबको देख के बहुत ही अच्छा लगता है that you know who all are present on the call and okay. So very good afternoon. Good afternoon, Mohita ji. Good afternoon, Annie. Good afternoon. बाकी भी अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लें, that would be amazing. So आज का जो हमारा chapter है, today is day 20 and today's chapter is called Heart Magic. And today's chapter is one of my favorite chapters. Today's chapter is one of the most, कहते हैं ना, इसको करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है. ऐसा नहीं है बाकियों में नहीं आता है, but आज का chapter takes you to another depth of feelings of gratitude, and we will start today's chapter in the next couple of minutes. Abhi, the school students are also to join in, so we have sent a message to them. We will also wait for them to join. Okay, तब तक आप में से किसी को कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है अपनी मैजिक बुक प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, तो आप कर सकते हैं. I would like to share. I would like to share that I remember when I first, I'll show you. I had taken an empty paper a while back and, I had written down this for myself. My vision that I see for this year in my personal life, in my professional life, and in my Shukrana, like the Seva point of view. So what are my dreams? And it is so amazing. जैसे पीछे chapter ने to-do list लिखा था कि there is immense in what you want. because सिर्फ लिख देने में ही बहुत power होती है. And then of course आप जो gratitude practice कर रहे हैं उससे तो वो और कहीं ज़्यादा जल्दी आपकी life में वो चीज़ चली आती है. So I just wanted to share, I had written in the area of gratitude that for this to be a compulsory practice among schools and for them to introduce it as a daily habit. So, and it has just been a couple of months since I've written it, in my dream list. And आज अभी जैसे हमारे इस वाले से students, teachers, principal, गरिमा मैम join in करते हैं. उसी तरीके से आज सुबह we were invited to Springdale School at Pusa Road in Delhi, and they had a first introductory session today. So जैसे होता है ना, आपको अपनी लाइफ में छोटे-छोटे मैजिक्स या बड़े-बड़े मैजिक्स या जैसे भी दिखे, आप जो चाह रहे थे आपको उस चीज से रिलेटेड क्यूज दिखने लग जाए. The more grateful you will be for that, the more faster that thing will come into your life. Right, so I'm just very happy today. Today was a very, very. I felt on top of the world. There is one school who wants to introduce gratitude as its practice, and I personally feel that जैसे कहते हैं ना, whatever you seek is seeking you, right? So that's how it is. जो भी आपका सपना है, whatever it is that you wrote down, is out there for you. And I personally feel it's magic book की practice करना, हर दिन make sure करना. देखो, अपना book खत्म हो जाए और अपने आप को बोलना अच्छा ठीक है कर लेंगे, चलो चलती रहेगी, हाँ पता है कैसे करना है, एक चीज होती है. मगर जब आप किसी स्ट्रक्चर में आके डेली एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में पता है आपको इतने से इतने बजे के बीच में तो करना ही करना है, रिजल्ट अलग लेवल का होता है. So good. Thank you everyone for being here. Any questions anybody has? Any sharings you want to do in the terms of your? Yes. Would you like to share? Anybody would like to share? What's happening in your life? How's the journey going for you? If you feel better. It can also be like one more thing I have observed since we have time for sharing that I want to share is that the more and more I am practicing gratitude,
I can start to observe that my reaction to things is changing. Like वो same चीज अगर पहले होती तो मैं किसी और ढंग से उस पे react करती, but now my reaction is also amazing me that oh, this could also be how I could react. So that is very new and very nice for me. Yes, anybody else wants to share, wants to speak? Any questions? Anybody has? कल का हमारा चैप्टर था मैजिक फुटस्टेप्स के बारे में. आप में से किस किस ने कल जादुई कदम लिए? प्लीज रेज योर हैंड. अपनी वीडियोस भी ऑन कर ले. Okay, yeah, so would you like to share how was it for you जब आपने वो steps चले उसका before and after? If there was anything, if not, then say no. Whatever way you felt. Rashmi ji, Pragati ji, would you like to share? Hi, good afternoon, ma'am. Can you hear me? Good afternoon. Yes. Yeah. मैं ये मीटिंग चल रही. अरे हाँ जी. Okay, good sharing, I guess. Yes. Okay. Yeah, okay, all right, that's fine. That's okay. Anybody else would like to share? आपने कल magic footsteps की assignment कैसे करी? Aniji, I would like to share. Yes. I'm sorry. Last time I attended your sessions at 11 to 12. Okay. Yeah, that was when I was introduced to all this magic and all that. Then I had a problem with standing in the kitchen. Was a very tough time for me. This is 1 hour I stand in the kitchen. The next day it is almost impossible to stand the next day. But once I started practicing, I'm not saying I do forget sometimes practicing, but whenever I stand for a long time, I land up always, at least I take with full gratitude and I started thanking my feet for it. And I think it's a matter of 2 months, I think, after those classes are over, I've seen a change in my feet, which I could not stand for 1 hour. Now I'm able to stand for 1 hour with very less pain. Thank you so much for all these changes you have brought in my thing. Thank you. Very nice, but I think, I'm glad that you reached a certain level in your health and you could always take it to the next level, right? So there are certain words. Yes, I will. I want to also, I will. Thank you. Good, thank you. Yes, anybody else would like to share? Yes. Pragati here? Yeah. I didn't do it yesterday, but I did it today. While coming from school, I have a 10 minutes walk, so I did it for 5 minutes. And in that, I have paid gratitude to so many things. I can't even think before it. So it was a good experience. Did you feel, did anything inside of you shift when you were able to find all those gratitudes feeling wise? Did it feel any different? Great. Thank you. Thank you for doing the assignment. Thank you. Yes. Anybody else who wants to share? ठीक है, चलो, बहुत अच्छे. Good. Thank you, everyone. I'm presuming everybody did the assignment. If you didn't do the assignment, तो भगवान आपका भला करे. कर लो, आसान है ना? I'm hoping कि जिन ने करी उन सबको करने के बाद अच्छा ही लगा, है ना? कुछ उसके nothing bad about it, right? So it will always make you feel good only, right? So my invitation is for everybody who did it, continue doing it whenever you're walking, whenever you see you're about to walk, you can do this practice that we learned yesterday. Okay? So chaliye, let's start with today's chapter. Today's chapter is the day 20.
and it's called Heart Magic. ठीक है, तो चलिए हृदय का चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Day 20, Heart Magic. French Revolution activist Jean-Baptiste Massieu says, gratitude is the memory of the heart. See, now we are on the 20th chapter, right? 20th chapter really means that you all have come a long way. है ना, हमारा 3 weeks complete होने वाले हैं. हम लोग आज मतलब 20th day पे पहुंच चुके हैं. तो इतना तो कोई presume that यार ये जो अभी book जिस level पे आ गई है, पूरे senior level पे आ चुकी है. Senior level का मतलब क्या हुआ कि अब जो ये assignments हमें बताएगी या जो अब हमारे साथ के this book is like a riddle, right? It's not very much. हमें अगर सिर्फ surface level पे समझेंगे तो we might miss out on the more things that it had to offer to us, है ना? So it is saying that gratitude is the memory of the heart. Now, what do you think that means? Think about it. Gratitude is the memory of the heart. कृतज्ञता आपके, let me see how do you say it in Hindi? I hope आप सब लोगों के पास ये books handy. I really hope. English में, हिंदी में, जिस भी भाषा में आप चाहो, but you've kept the book handy with you. कृतज्ञता हृदय की स्मृति है. Gratitude is the memory of the heart. What do you think that means? What do you mean by memory? हमारे heart की memory होती है. I don't know. क्या कहना चाह रहे हैं? आपने कभी देखा है, आप पीछे मुड़ के देखते हो अपनी लाइफ को, है ना? आज आप जहाँ भी हो, आप पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को, आप किसी इंसान को याद करते हो, है ना? तो आपको उस इंसान के बारे में क्या याद आता है? नॉर्मली उस इंसान के बारे में ना वही चीजें याद आती है जो उन्होंने अच्छा किया, है ना? लाइक मे बी बाकी सब चीजें आपको उतना ध्यान हो ना हो, है ना? दे मे नॉट टच योर हार्ट, they may touch your mind, they may touch your pockets, they may touch your, whatever, everything. But आपके दिल को जो बात छूती है, या आपके कहते हैं ना, ये बात तो मेरे दिल पे घर कर गई. This was etched in the memory of my heart. So what is the memory of your heart? Like, this is my understanding. I may be right, may be wrong. I don't know. This is how I like to. आप सब लोग भी dwell upon it. है ना? And this is an interactive. End में आप भी share करना, आपको क्या लगा, इसका क्या मतलब है? So let's proceed. You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world increase too. Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach that level. So, इतना तो हम अभी तक समझ चुके हैं. अगर आप लोग पिछले 20 दिन से सब practices कर रहे हो the way it is designed, कि the final, कहते हैं ना, ultimate goal क्या है? आपकी फीलिंग्स. अल्टीमेटली हमें मतलब किससे है? आपकी फीलिंग्स से. आप अभी फील गुड कर रहे हो, फील ग्रेटफुल कर रहे हो, या आप कुछ और फील कर रहे हो, नेगेटिविटी, है ना? सो इस चीज को we've understood till now. आप लोगों ने ये भी देखा होगा, कुछ दिन मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ, कुछ दिन ओके लेवल का फील करती हूँ, है ना? आगे बढ़ते हैं. The heart magic practice is designed to powerfully increase the depth that you feel gratitude by focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic words, thank you.
Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvements to your immune system and health. That gives you an idea of the power of heart magic. It takes a little practice the first time you try it, but it is worth the effort. After a few times you will get it, and each time you practice it, your feeling of gratitude will increase So exponentially. आज का जो चैप्टर है ना उसके और भी बहुत सारे फायदे हैं. आपको पता होगा कि आपका जो दिल है वो आपकी बॉडी के हर बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचाता है. यस, डर्टी ब्लड लेके उसको प्योरीफाई करना, उसको ऑक्सीजन से भरना, एंड देन उसको है ना उसके सारे नसें, वो ब्लू कलर रेड कलर की नसें उसकी होती है ना. आपके दिल का ये काम होता है, आपकी बॉडी के एक एक उंगली में एक एक जगह पे मतलब ऑक्सीजन पहुंचाना, है ना. आपका दिल आपकी सांसों से कनेक्टेड होता है, right? How you breathing, it's directly correlated. Now you need to understand, doing today's practice, since it is particularly about your heart, has multiple benefits. Multiple benefits how? जैसे उन्होंने पहली बार क्या बोला, आपका जो दिल की धड़कनें हैं, right? Just you can take your right hand, keep it over your heart, right? When you do today's assignment, it will smoothen out your heartbeat. Then वो evenly धक धक करेगी. वरना normally क्या होता है, जैसे भाग के आते हो तो क्या होता है, कैसे तेज तेज दिल धड़क रही होती है, या कभी किसी दिमाग में किसी चीज को लेके टेंशन चल रही है, स्ट्रेस लग रहा है, पता नहीं क्या होगा वाली फीलिंग चल रही है, तो क्या होता है, दिल तेज तेज धड़कने लग जाता है ना. कोई डरावनी चीज देख ली, दिल धड़कने लग जाता है तेज तेज. यस, you need to understand everything is code. I don't know अगर आप ऐसे कुछ लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हो, आपने अगर कोई योगा या किसी ऐसे स्पिरिचुअल प्रोग्राम, तो आपने जाना होगा आप इस धरती पे लिमिटेड नंबर ऑफ सांस लेकर आए हो. Yes, no, anybody heard of that? You were sent on the planet Earth with a limited number of breaths. Has anybody heard of this concept? No? So you are given certain amount of breaths, right? Like it could be, say, 1,000 crore breaths, or maybe 100 crore breaths, or maybe 50,000 or 50 lakh breaths, whatever. Every person, कहते हैं ना, आप अपनी number of breaths के साथ भेजे गए हो कि कितनी सांस से आपको मिलेंगी. Now you need to understand. I'll give you an example. आपने देखा होगा दो animals, right? Take a dog and take a turtle. आप अगर कभी किसी dog के पास बैठे हो, even when the dog is resting, right? Even when the dog is sitting at one place, उसकी breath देखी है आपने? How fast it is? Yes, no? Like a dog is constantly breathing fast and fast and fast. Yes? What is the average life cycle of a dog? कितने साल तक जी लेते हैं? 10 साल, 12 साल, 15 साल max. 15 साल, 16 साल तो ओहो. Yes? Now similarly, you look at a turtle, right? कछुआ. एक turtle की जो breath होती है ना, वो करीब 45 seconds to 1 minute तक अपनी एक ही breath को लेता है, you know. वो एक average life cycle क्या होती है उसकी, life span क्या होता है उसका? 100 साल, 120 साल, 200 साल, normal. Right? So दोनों में फर्क क्या है? आप अपनी breaths को कितना efficiently use कर रहे हैं. ठीक है? You may not have thought about this before. I don't know, maybe could have. However, this is how it is, right? So when you are having an even heart, that means you'll be having even breaths. That definitely means you'll be having a longer lifespan, because आपको कहते हैं जितना कोटा मिला है उसको आप आराम से सोच समझ के वसूल रहे हो, ऐसे फिजूल खर्ची नहीं कर रहे हो. ठीक है? So this is one benefit. Second benefit, of course, is if your heart is healthy, वो आपके एक एक बॉडी पार्ट में अच्छे से खून पहुंचाएगा, है ना, तो वो सब लोग अच्छे से काम करेंगे. Yes. तीसरा, आप जिंदा हो यार उसकी वजह से, है ना, तो उसको थैंक यू कर दोगे तो आप ही का मतलब भला होगा. आज आप जिंदा उसकी वजह से हो. You would have observed, right? Like a person's every part of the body could be dead. Everything could be dead. But if the heart is beating, the person is alive.
Yes, their hands, eyes, nose, brain, whatever, but दिल धड़क रहा है ना, जिंदा है. So दिल आपकी एक ऐसी चीज है ना. From the moment you were conceived into your mother's womb, the first thing that came was this that we are going to talk about today. So आज का चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपने ये कर लिया ना, it will take your feelings of gratitude to another level, probably like you've never felt before. Even if you've done this book 25 times, 30 times, doesn't matter. Because it's an experience, right? After, it will take practice. Yes, initially हो सकता है आपको ना हो, it's fine, but keep on doing it, ठीक है? It will increase exponentially. And हो सकता है आपको पहले वो gratitude की feelings में आने में 20 मिनट 25 मिनट करके उस फीलिंग्स में आ रहे थे, आप आज की एक्सरसाइज करने से हो सकता है 25 मिनट की बजाय आप 7 मिनट में उन फीलिंग्स में आ जाओ, जो आज का चैप्टर आपको सिखाएगा कि कैसे आप ये हार्ट मैजिक की प्रैक्टिस को कर सकते हैं. चलो पढ़ते हैं. To practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It does not matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier. And while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you. Once you have practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. There are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words thank you. Or you can imagine that the magic words thank you are coming out of your heart rather than your mind say as you say them. As part of today's magical practice, take your top 10 desire list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind or out loud. And when you get to the end of reading each one, close your eyes, focus your mind on the area around your heart. Keep your mind on your heart area and say the magic words again, thank you, slowly. Again, you can use the tips I have given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desires, you will have not only increased the depth of gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your तो ये top अभी हमें क्या बता रहे हैं, desires. इन्होंने हमें बताया है कि हार्ट मैजिक कैसे करना है ना. आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो, आप अपने दिमाग में you can imagine the area inside your heart, or like, you know, about outside, inside, whatever you want really. And for more, you can also keep your right hand over your heart. That helps in आपका उस जगह पे ध्यान लगाना, है ना. And then आंखें बंद करके you can imagine your heart and give your thank you for it, and then do the assignment. ठीक है. So these are some tips that it is saying. Then उसके बाद जब आप अपने हार्ट के लिए, अभी ना what we'll do is after we are done with the reading of the chapter, we will do a demonstration also. I'll do for my dream, you do for your dream. Okay. So what it is saying, once you've done heart magic, then after that you take your dream. अभी आपकी जो भी number 1 dream है, कोई भी एक ड्रीम जो आपको है यार ये तो मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है, उसको आप चूज कर लेना. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस हार्ट मैजिक को उस ड्रीम के साथ, आपका जो नंबर 1 ड्रीम है उसके साथ इस्तेमाल करेंगे. तो क्या होगा, अब आप अपनी ड्रीम को सिर्फ रट्टू तोते की तरह लिख नहीं रहे हो, मगर आप ये कृतज्ञता की भावना, ग्रैटिट्यूड की भावना, थैंकफुलनेस की भावना अपने उस सपने के साथ भी एसोसिएट कर रहे हो, है ना. और जितना ज्यादा थैंक यू की फीलिंग आपकी उस सपने के लिए होगी, उतनी ज्यादा तेजी से वो चीज आपकी लाइफ में आएगी. अच्छा, one more statistic that I want to share is that I'll show you. One second. One second. Power versus. So a lot of times हम में से ना बहुत सारे लोग अपने सपने अपने दिमाग से बनाते हैं, है ना, logically. अरे यार, but this should be this. Oh, but he has this car. My logic says for my ego, I should also have that car. And you know, all of that.
दिमाग से हम काम करते हैं. Just for a statistic, ये मैं नहीं बना रही हूँ. You can actually see electrical components. 1 second. Why we should increase our heart's harmony, जो आज हम सीखने जा रहे हैं. With an electrical component about 60 times greater and an electromagnetic energy field 5,000 times greater than the brain's. The heart has a significant influence on the body down to the cellular level. That simply says, आप कोई चीज दिमाग से logically मांगोगे versus कोई चीज आप सच्ची मुच्ची दिल से मांग रहे हो. दिल से मांगने से that thing comes to you 5,000 times faster. Why? Because that's just how it is. That's just how it is, right? Your heart has that. आपने लोगों को सुनते हुए नहीं कहा बेटा दिल से मांग, है ना? बोला होगा बेटा दिल से मांग. मगर हमें क्या लगता है किसी और से मांगना है ना? आपने किसी से सुना होगा बेटा दिल से मांग. हमें क्या लगता है दिल से बाहर किसी मूर्ति पड़ी है उस मूर्ति से मांगना है मगर दिल से, है ना? नॉर्मली वी थिंक ऑफ इट लाइक दैट. यस नो, है ना? जब कहते हैं दिल से मांग, अरे वो मम्मी है पर मम्मी से मांगना है मगर दिल से मांगना है, पर देने वाली मम्मी है नहीं. we didn't understand. It's actually saying भाई अपने दिल से मांग. Ask from your heart that's inside of you. उसके अंदर पावर है 5,000 टाइम्स ज्यादा कि वो आपको वो हाथ में पकड़ा देगा. Whatever it is that you want, है ना? तो आप पहले तो अपना सपना देख लेना. जो आपका सपना है दिल से चाह रहे हो दिमाग से चाह रहे हो, सच्ची मुच्ची, है ना? अंदर तो आपको पता ही, आपके दिल को थोड़ा ना झूठ बोल पाओगे, है ना? एंड अगर जो सपना है, देखो आपका जो भी सपना है, सोचो अगर आपने उसके अंदर अपनी हार्ट की एनर्जी को कंबाइन कर दिया तो कितना पावरफुल एंड कितना फास्टली दैट विल कम इनटू योर लाइफ. नो, तो आज का चैप्टर आपको वो सिखा रहा है ना? आज का चैप्टर आपको सिखा रहा है कि भैया अगर अपने इस एरिया में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स में रॉकेट लगाना चाहते हो तो क्या करना है. ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम एक थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे. 1 second. You can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them, or you can use heart magic anytime you say the magic words thank you. Even just using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. And with gratitude, it is all about the depth of the feeling, because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. The initial physical signs that you have increased the depth of your feeling could be that you get a tingling feeling around your heart or feel a wave of joy rush through your body. Your eyes may fill with tears or you may get goosebumps. But without exception, you will begin to feel a depth of peace and happiness you have never felt before. ये जो chapter है ना is one of the most, I run short of words. The kind of ecstatic feeling it leaves you in. Now, different people react differently, right? Which is fine. Some people are overwhelmed. Some people may cry. Some people के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, which is fine. Whichever way you react or don't react is normal. The only ultimate thing is that you should feel good, right? So let's recap the assignment before we. Magic practice number 20, heart magic. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, focus your mind and your attention on the area around your heart. Number 3, close your eyes and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words thank you. Number 4, take your top 10 desire list and practice heart magic by reading each desire, then closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart, and slowly saying thank you again. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand
and say the magic words thank you for the best thing that happened during the So day. ये हमारी assignment. Thank you for listening. हाँ जी, so ये हमारी आज की असाइनमेंट है, ठीक है. सुबह उठते ही 10 ब्लेसिंग्स लिखना. मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि जितनी जल्दी सुबह लिख सको उतना बेहतर है, ठीक है. एंड रात में सोने जाने से पहले अपना मैजिक वर्क करना, आपके दिन में जो जो अच्छी चीज हुई, आई लाइक टू स्पीक इट आउट लाउड, वरना ना दिमाग बहक जाता, पता नहीं कब सो जाते हैं. तो आई लाइक टू स्पीक इट आउट लाउड कि आज दिन में ये अच्छा हुआ, आज दिन में ये अच्छा हुआ, आज दिन में ये अच्छा हुआ, मगर बेस्ट ये हुआ, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू करके मैं सो जाती. ठीक है. सो दिस इज द डेली प्रैक्टिसेस दैट वी हैव बीन डूइंग. देन उसके बाद जो अब आज की प्रैक्टिस है हार्ट मैजिक, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. Okay, so now if anybody has any questions, you can ask. Otherwise, we'll start with the practice, right? We'll do a demonstration of that. Should we do that, or anybody has any questions? So let's get to that after that. Okay, everybody, do you want to do it? I should ask for consent also. Would you want to practice what today's chapter is saying? We could do it together. Just write in the chat, yes, no. Okay, wonderful. Great. Okay, great. Okay, so thank you everyone. ठीक है. So everyone, please sit comfortably. ठीक है. Make sure you're sitting on a chair and that you're sitting straight. Keep your spinal cord straight. And you can, आपके अगर हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है तो उसे रख दो, पैरों में कुछ है तो छोड़ दो. You know, just close your eyes. Close your eyes and just relax. You can take your right hand and keep it above your heart. So ये जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हार्ट मैजिक की, उसका कॉन्टेक्स्ट है अपने दिल के लिए दिल से थैंक यू करना, और फिर उसके बाद आपका जो टॉप नंबर 1 ड्रीम है उसके लिए इस प्रैक्टिस को करना. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So, सबसे पहले just take a deep breath in. Feel your chest expanding as you take a deep breath in. Hold. सांस बाहर छोड़ें. Again, take another deep breath in. Hold. सांस बाहर छोड़ें. एक बार फिर से we'll take a deep breath in. इस बार बाहर छोड़ते छोड़ते आपके दिमाग में भी जो ख्याल है, just let them also go. Breathe out. Whatever's in your mind, just let it go. Let it go. Your right hand is above your heart. अपनी आंखें बंद रखें. Just try to feel your heartbeat. Can you feel your heartbeat? Try to listen to the pulse. Can you feel it? If you can, good. Say, hello, my heart. How have you been doing? Thank you. Thank you, my heart. Thank you so much. Thank you. हमेशा मेरे लिए धड़कने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू. जब से मैं पैदा हुई हूँ, छोटी सी थी, तब से लेके आज तक, every single moment, every single day, you've been beating for me, just for me, only for me. Thank you so much. आज मेरी लाइफ में कुछ नई चीजें चल रही हैं. कुछ महीने पहले कुछ और चीजें थी. कभी किसी को संभाल रही थी, कभी किसी को संभाल रही थी, मगर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि I have somebody who's always working for me, always loving me unconditionally. कभी 2 बार मुड़ के भी नहीं देखा आपकी तरफ. I'm sorry.
ना जाने लाइफ में कहाँ कहाँ भागी जा रही हूँ, ये करना है, वो करना है, अच्छी बात है, बट आई एम सॉरी दैट आपने मेरे लिए आज तक जितना भी काम किया, मैंने उसके बारे में कभी 2 सेकंड सोचा भी नहीं। हाँ, आपका तो फर्ज था करके छोड़ दिया, बट आई एम सो सॉरी। आपका कितना बड़ा दिल है ना कि आपने कभी मुझसे एक बार छुट्टी तक नहीं मांगी, कभी मेंटेनेंस नहीं मांगी, कभी कुछ नहीं। लाइफ में न जाने कितने फ्रेंड्स आए, फ्रेंड्स गए, ना कुछ बदला। उनके लिए तो न जाने कितना रोती रही, ये करती रही, ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, ये लॉस हो गया, बट आई नेवर पेड अटेंशन दैट मेरे जस्ट अंदर एक ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए धड़क रही है, सिर्फ मेरे लिए। Thank you, my heart. Thank you so much. Thank you for being so wonderful. आपके जैसा दिल तो भगवान सबको दे। कितना अच्छा दिल दिया भगवान ने मुझे। Thank you so much, God. इतने वंडरफुल चीजें मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है। वेकेशंस, एक्साइटमेंट, नए नए क्रश की पेट में बटरफ्लाई। I could experience the beauty of life because you were there with me. Because you were always with me wherever I went. वो चीजें जो मैं किसी को बता भी नहीं सकती, सब आपको पता है। ऐसी ऐसी चीजें जिसके बारे में सोच के आज शर्म आती है, वो सब आपको पता है। Still you accept me the way I am. Still you beat for me no matter what. गलतियां करती हूँ, न जाने कैसी कैसी हरकतें करती रहती हूँ, still you're always by my side, irrespective. आपका बहुत बहुत thank you my heart, thank you so much. कभी सोचा ही नहीं, आज किसी पे दिल आ गया, कल किसी पे दिल आ गया, किसी ने बात करनी छोड़ दी तो अपसेट हो गए, मगर कभी सोचा ही नहीं कि आप भी हो जिसके साथ ऐसी लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप बनी हुई है। थैंक यू, से थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी वजह से आज मेरे हाथ, पैर, उंगलियां, एक एक बॉडी पार्ट काम कर रहा है, सब कुछ आपकी वजह से चल रहा है। थैंक यू। आप इतने छुटकू से हो, मगर पता नहीं तब भी कैसे इतनी साफ सफाइयां करते रहते हो। मैं तो न जाने कितना गंद भला भी खाना खा लेती हूँ, कभी सोचती भी नहीं हूँ कैसे साफ होगा, क्या होगा। आई डोंट थिंक ट्वाइस, बट यू ऑलवेज टेक केयर ऑफ मी। डबल शिफ्ट भी लगानी पड़ती है तो लगा लेते हो, मगर हाँ, मुझे हमेशा साफ रखते हो। थैंक यू सो मच। जितना प्यार आपने दिया है, मुझे नहीं लगता कभी कोई सोच भी सकता है। अगर मैंने आपको कभी याद नहीं किया, उसके लिए सॉरी। थैंक यू माय वंडरफुल हार्ट, थैंक यू so much. Put a smile on your face and really thank it for the wonderful gift that it is. Thank you God, thank you so much. मेरे इतने wonderful heart के लिए बहुत बहुत thank you. And now think about your number one dream, the number one dream of yours, and think जैसे वो चीज अभी इसी मोमेंट सच हो चुकी है, like it has come true. You're living that right now. How are you feeling? How are you feeling? Oh wow! वो चीज जो आप इतने समय से चाह रहे थे,
finally it's come true. How are you feeling? What kind of emotions are there in your body? How's your heart feeling? Are you jumping with joy? Are you excited? What are the sensations inside of your body? आपके दिमाग में क्या ख्याल चल रहे हैं? आपके आसपास कौन कौन लोग खड़े हैं उस समय? वो आपको क्या कह रहे हैं? अरे वाह! आप कैसे उनको रिप्लाई कर रहे हो? हाउ आर यू सेलिब्रेटिंग विद देम? कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? वो आपकी कैसे तारीफें कर रहे हैं? Wow, how are you feeling? They'll say like, how are you feeling? Oh my God. Yes. Thank you, God. Thank you so much for my beautiful life. Thank you for making my dreams come true. Thank you so much. Thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you. Finally, this day has come true. Thank you, God. Thank you. Woohoo! Yes, feel the joy that you feel. Abhi, isi moment, it's come true. Yes. Wonderful, right? Feel the feelings in your body right now. What kind of sensations are you having in your body right now? Enjoy it. Enjoy it. And whenever you're ready, just open your eyes. Okay, you can take your hands, you can rub them, you can place them on your eyes. You can open your eyes. Yes, thank you. Thank you everyone for being in this practice, and thank you for doing it. And if you would like to share, how is it for you? You can just unmute and just share how is the practice for you. And I would like to share something about yesterday's incident. Yes. I was just doing this, it came to my mind. Yesterday, like I was on my duty for my CBSE exams. And I was in the bank in the morning at around 9:15. And there suddenly one small boy comes around, he's 7 to 8 years, you know, they're working at the tea stalls and everything. And like he came so enthusiastically, he was serving tea to everybody. Aap bhi le lo, aap bhi le lo. And this thought came to my mind. I just wanted to give him one chocolate. And I searched my bag, and I had in my mind the chocolate is there in my bag. I searched my bag, but I could not get that chocolate at all. And I was feeling a little bad that like I could not give it. And I went back to my exam center. And when I opened my bag, I saw that chocolate. Actually, and there I searched, but I could not. Then again in the evening at around 4:30, 4:45, we have to go. 4:30 around, we went back to the bank. And coincidentally, that boy came back again. And again serving the tea, and I actually opened my bag, and I was really feeling happy that I could get the chocolate, and I gave it to him. He went back with a big smile on the face and returned back. He's 7, 8 years old, and he came to me and said, "Thank you, ma'am." So imagine and that boy is no, I just was talking in the morning. He doesn't go to school. He doesn't know about studies. And never has seen the books. He has never seen. But the smile with that little boy saying that paying gratitude with such a small means I cannot explain in words, but I can feel that still. Yeah. So still that boy is in front of my eyes, and little ones, like they are so innocent, they have these gratitude feelings. Yeah, but yeah. only thing is like they don't know, like sometimes we don't realize the gratitude they are paying little ones. So it was actually a very heart touching experience for me yesterday. Thank you. Thank you, Angela ma'am, for sharing. Thank you, ma'am. Thank you so much, Annie. Thank you. Thank you, ma'am. And I think that's how it is, right? Some things you just can't put into words. It's a certain kind of joy that you can't put into words. So, but I'm glad. But I really felt satisfied. Like I was
thinking something, I was not able to do it, though it's a very small gesture. But I think any gesture that comes through heart, you know, Yes. that what you are saying, Yes. it's very, very important. It's not a thing of how costly, expensive, or small or big it is, but that it comes from, when it comes from your heart, you think from your heart, it comes out some or the Yes. other day. Might be it takes time, but it happens. Yes, ma'am. Definitely. Thank you. Thank you for listening. Thank you so ma'am. much. Thank you for sharing. Thank you. Yes. Who else would like to share? How is this experience for you? Please. Are you able to unmute? हिंदी में भी बोल सकते हो, सिर्फ इतना भी बोल सकते हो अच्छा रहा, ये भी बोल सकते हो कुछ फील नहीं हुआ, कुछ तो बोलो. Just unmute yourself, everyone. Annie, I like to share my experience. Yeah. Whenever I've done this practice of heart magic with you, it's so overwhelming. I always get tears of joy. I always feel I'm there in my dream. It's an experience. Always, it's one of my favorite chapters in the book. It's like I can't express it. Like you feel the gratitude from your heart actually, and you feel like you have neglected your heart so much. Because otherwise you never pay gratitude, especially when this chapter comes, you feel, yes, I have to pay gratitude to my heart, because you're born with it until the day you die, it beats for you. And we take it for granted always. Beautiful. It was an amazing experience. Thank you. Thank you. Thank you, Shweta ji, for being here, and thank you for sharing. Thank you. Yes. Who else would like to share? How's it going for you? चारू जी, जागृति जी, हरमीत जी, कविता जी, किरण जी, अब सबके नाम बोलने पड़ेंगे क्या? आ जाओ, अनम्यूट करो. हाँ जी. हरमीत जी. हाँ जी, मुझे आज इतना अच्छा फील हुआ मैम. अभी ऐसा फर्स्ट टाइम मुझे फील हुआ कि मेरा भी हार्ट है जो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है. पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अकेली हूँ, मैं बोलती हूँ, अपने दिल से बोलती हूँ, बट मेरा दिल कभी सुनता नहीं है. आज ऐसा लगा मेरा दिल मेरी सारी बातें सुन रहा है, और जो भी मुझे चाहिए, जो भी मैं अचीव करना चाहती हूँ, मुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा. तो और मेरी आंखों में भी इतने आंसू आ रहे थे मैम, जब आपने बोला आप अपने हार्ट पे हाथ रख के ये सब बोलिए, तो मतलब बहुत ही इतना अमेजिंग फील हुआ मैम, और मेरा रोना भी बंद नहीं हो पा रहा था. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ, ये तो होता है. वैसे बहुत सारे लोगों ने हो सकता है आज पहली बार अपने बहुत सारे लोग हो सकता है अपने आज पहली बार अपने दिल से बात करें. बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है ना? सो अच्छी बात है. जैसे होता है ना, अपनी दोस्ती बनाए रखो, है ना? दिन में जब ब्लेसिंग्स भी आप कर रहे हो ना, 10 ब्लेसिंग्स, तो उन ब्लेसिंग्स के साथ भी आप इस हार्ट मैजिक को कंबाइन करके करते हो, तो इसी बहाने आपका रूटीन बना रहे. बट गुड, आई एम ग्लैड. Who else will like to share? How was it for you? Ma'am, good afternoon. Myself, Geeta Pandey. Anji. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, you are. Yes, ma'am. First time I realized that I have a heart which pumps 24/7, or since I was in the womb of my mother. So this is the first time I visualized actually एक छोटी सी चीज जो हमेशा काम कर रही है. मैं सो रही हूँ तो भी काम कर रही है, और रेगुलर कर रही है. जिस दिन ये रुक गया उस दिन कुछ भी नहीं है. And ma'am, it was so positive feeling that yes, now I don't have any words to express. You कितना अच्छी feeling थी ma'am. And thank you so much for this feeling. Thank you for practicing it. And ma'am, I would like to share one thing. In these 4 days holidays, I went to my parents and I discussed this with my father. So, and I was carrying the book which ma'am has gifted us, and I showed him that look, daddy, I have this, and this type of workshop is going on in our school. So he went through the book and he said, okay, can I keep this book with me? So that book now is with my father, and he has started reading it. Very good. And that is really something which I love. It is something that he is realizing in his life. Wonderful. Good. Thank you for sharing this with your family as well.
Thank you so much. Thank you. कहते हैं ना प्यार बांटने से बढ़ता है, वैसे gratitude बांटने से और बढ़ के आएगा. Thank you. Thank you so much. Thank you for being and sharing. Anji, anybody else would like to share? How was it for you? For me also, it is like मैं जब ये खुद assignment करती हूँ उसका एक रहता है, but जब ये chapter particularly आता है and जब हम ये practice करते हैं, it is another level of, as every, like, you know, you run short of words कि यार पहले तो अपने ऊपर भी शर्म आती है कि कितना ज्यादा neglect में रखा हुआ है. इतना कुछ करने के बाद 30 बार ये किताब पढ़ चुकी हूँ मैं, तब भी अपने हार्ट को, हाँ ठीक है ना, अब तो कर तो लिया था, थैंक यू. तब भी वो बेचारा कहता है चल कोई नहीं, मैं धड़क लेता हूँ इसके लिए ये तो. एंड ऑल्सो फिर लगता है यार, कहते हैं ना, आई एम लुकिंग फॉर अनकंडीशनल लव, कोई मुझे वैसी एक्सेप्ट करे द वे आई एम एंड आई एम नॉट, इन माय हाइज एंड माय लोज. तो फिर देखो यार, ये तो मेरे अंदर बैठा है और इसने तो मुझे एक्सेप्ट किया, मेरे लिए काम भी करता है ये, और मेरे से पैसे भी नहीं लेता. मतलब इससे ज्यादा अनकंडीशनल क्या मिल सकता है. सो फॉर मी इट्स अ फीलिंग ऑफ ओवरवेल्म व्हेन आई डिड दिस प्रैक्टिस टुडे. यस, हु एल्स वुड लाइक टू शेयर? हाउ वाज इट फॉर यू? Kavita ji, Jagrati ji, Yeah, I'd like to share. Yes, Garima ma'am. So I think, of course, everybody shared how overwhelmed, one feels when one does it. And of course, that's true. But I also felt, a sense of calm and serenity. Yeah. When you kind of, touch your hand on your heart and then speak and also visualize. So the power of visualization also comes very real, when you're doing that. Yes. I think the whole अगर scientifically इसको देखा जाए कि इसको heart पे हाथ रख के हम क्यों कर रहे हैं, is also जैसे होता है ना, when you're dreaming, people say कि अच्छा मुझे चुटकी वो what do you say, pinch me to know that it's for real. Yeah. So actually, when you're in physical contact with your own self and you're visualizing your dreams, actually, because you're in contact with yourself physically, it seems that it's all happening for real. So it's to give that sort of a feel that your dreams are not just imaginary, but they're actually coming to reality, and you can go deep inside it. Smell of air, what clothes the people are wearing around, what they are talking or giggling, ya kya sab activities kar rahe hain, so I could also kind of visualize it in my first visualization that I was doing. The second thing that I like to share is also one benefit that I have observed and I have been observing for days. So I was having a very terrible cervical and back problem for last 2 months, which was persistent. And I have been giving gratitude to it without it being resolved. I've been giving gratitude to it in advance, for my back, and thanking it that I've neglected it for so long. And it supports me all through the day, to sit, to walk, to do whatever. And I'm overexerting myself physically a lot of times, and I know it. And yet it just goes unnoticed. So I was thanking it. And while today's practice was going on, I realized that I've been pain-free for last like 10 days almost. And I didn't even realize it all along until now. So yeah, that's something I would like to share. That I've been writing about my back and giving it gratitude in advance that it's perfectly fine, no pain. And wo pain itna strong tha otherwise that even when I would wake up in the morning, I'll still be having pain. It would the rest and relaxation of like 6 hours of sleep will not get me okay. But yeah, for last 10 days, it's gone. The gratitude magic has worked, I think, for me. Congratulations. Yeah, just continue doing the practice. Continue, just keep on doing it. Just a little bit of feedback since you shared, instead of using the word pain or, pain has gone, don't use the words that you don't want in your life, right? You can say my back is healed, my spinal cord's healthy, I wake up and I'm active. Like just to use words that, the reason I'm saying this is because the universe is constantly listening, right? So even when I say I don't have this, the universe may not listen to the not word. But congratulations. Very, very nice. Thank you. Thanks so much. Thank you. Thank you.
Yes. Anybody Good evening. else? Good evening, ma'am. Am Good I audible? Anji. First of all, ma'am, I would like to thank you because every day, somehow or the other, it happens that all of us tend to quote this gratitude and no complaints. You know, now it has become a part of our this thing that the moment we try to say something in a negative, and that thought comes that you should not start the day with complaints. And one day in my class also, I told the students ki beta any didi bolti hai complain mat karo. Before I could complete, the student says, no ma'am, but you can say, because any didi says you can say but. है ना? So I was so happy that you people are listening and following it. So this thing, they said, I said, beta, but if I leave it, so they said, no ma'am, any didi ने बोला but बोल के हमें बता सकते हो. And you know, intentionally or unintentionally, ma'am, it has happened. We have started praying gratitude to so many of us. Like earlier, we were neglecting. This thought did not come, but now it has become a part and parcel of our life that we have started using this word thank you, thank you, thank you so often. And it gives us such a sense of, you know, satisfaction. Complaining would end in, you know, spoiling your day or your thought process. But when you feel gratified, when you give gratitude to others, and just now when we discuss about this heart, the thing that struck my mind was कि heart is something जो tirelessly, like it works day and night without pausing it for even for a second. मतलब 1 second also, if it takes a pause, it causes disaster. So the lesson which I learned was कि हम अगर if I start counting my blessing, so blessings would be endless, and the list of complaints or our shortcomings would be much less than our blessings. So thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, Kavita ma'am. It's so wonderful to hear. You know, and I'm so glad to hear that the students were also listening keenly and, you know, are picking up the things for themselves. But I'm so happy, and thank you to Garima ma'am. मेरे को तो यही लगता है that, you know, the culture that is being created, and you know, we are doing the practice for the first time together, but I'm just very excited. Thank you for creating that. Thank you so much, Garima ma'am, and for everybody. आप सबकी वजह से, you know, it's I know I am not the same person, right? Like me being here, discussing each chapter, every line, although I've done it 30 times before, but still something new opens up. So it is all because of your listening and, you know, you wanting to take value from the session. So thank you for it. Yes, last sharing. Who would like to share your experience? How is the journey going for you? Milky Singh ji, Manisha Yes, ji. ma'am. Yes, Tanya ji. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually, I want to share that this was not my first practice when I was saying thank you to my heart. Actually, I did it when I saw the movie Three Idiots. Yeah. All is well वाला जो था, तो वो वाला practice whenever I get angry, जैसे मुझे लगता था कि हाँ ये गलत हो रहा है फैमिली में या कहीं पे भी, पर मैं कह नहीं सकती उस पर्सन को जाके, इट इज नॉट इजी और इट इज नॉट पॉसिबल, वो नहीं कहना चाहिए, तो मैं अपने हार्ट को कहीं ना कहीं ऑल इज वेल करके काम करते थे. तो ये पहले मैंने किया हुआ है और इट रियली वर्क्स व्हेन वी से समथिंग टू आवर हार्ट. यस, बिल्कुल आप अपने दिल को जो सुनाओगे, बेचारा बहुत शरीफ है, वो मान जाता है. आप उसे डराओगे तो वो डर जाता है, आप उसे बोलोगे ऑल इज वेल तो वो शांत हो जाते हैं कि ऑल इज वेल. उसे नहीं फर्क पड़ता बाहर क्या चल रहा है. Yes, ma'am. Actually. Thank you, Tanya ji. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, okay. We have 5 more minutes. That's why, if anybody else would like to share. Yeah, good afternoon, ma'am. As if you have called my name twice, Jagrati, I am speaking over here. Actually, ma'am, the way you are saying, the dreams आप बता रहे हैं and saying thank you, I had been practicing it from very long time. शायद मैं बचपन से ही, और मेरी कई ड्रीम्स फुलफिल भी हुई हैं. मैं मंदिर में जाती थी and I never used to say कि मुझे ये मिल जाए, बट हाँ ये जरूर हाथ जोड़ के कहती थी कि डेफिनेटली अगर मेरे साथ कुछ अच्छा होना है तो ये हो जाए.
And there are certain dreams which I think अभी शायद मैं नहीं शेयर कर पाऊँ, but हाँ वो चीजें हुई हैं मेरे साथ. As if जैसे एक छोटा सा है एग्जाम्पल कि मैंने I was too young, तो मुझे I was on the second position in my at home, मतलब सेकंड प्लेस पे आती थी, तो मुझे लगता था नहीं बड़ा होना चाहिए, लड़कियों को घर में बड़ी बेटी हो तो ज्यादा अच्छा होता है. एंड आई यूज्ड टू प्रे टू गॉड कि अगर मेरी बेटी हो तो वो पहले मेरी बेटी हो. और वो मेरी ड्रीम फुलफिल भी हुई थी. Same way, 2-3 other modes, my dreams had been fulfilled, and I am always thankful to God whenever I go. जब भी मंदिर जाती हूँ तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलती हूँ कि जो भी मुझे दिया है, yes, you have given to me. And whenever I am sitting alone, या कभी मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो I sit calmly in my room और उस चीज पे सोचती हूँ and then think of it, और उस चीज को खुद ही I try to solve it rather than saying it to other persons. तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अपने आप को बोल के आपको, क्योंकि और बहुत कुछ मिला है, इस दुनिया ने आपको बहुत कुछ दिया है, एंड आई ट्राई टू गिव इट बैक टू अदर्स ऑल्सो. तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि जब मैं किसी और को देखती हूँ पेन में, तो आई फील कि नहीं वो मुझसे ज्यादा पेनफुल है. सो आई डेफिनेटली ट्राई टू गिव इट टू देम. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच जागृति जी. थैंक यू. देखो, अगर आज आप इस क्लास में बैठे हो ना, इट्स ऑलवेज बिकॉज आप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थैंकफुलनेस थी, है ना. जिस इंसान को थैंक यू का टी नहीं पता, उसको ये चैप्टर समझ ही नहीं आएगा कि क्यों बोल रहा है थैंक यू, है ना. सो अगर आज आप यहाँ पे बैठे हो एंड यूर एक्सपीरियंसिंग इज बिकॉज डीप डाउन यू बिलीव इन इट. एंड जो आपने बोला कि हाँ मेरे को बहुत मिला है, मुझे है कि अब मैं दूं भी भावना, ह्यूमन टेंडेंसी यही होती है. अगर आपने देखा होगा, हमने स्कूल में बीएसटी में एक चार्ट पढ़ा था मैस्लोज हायरार्की का, है ना, जिसके अंदर बेसिक में वो कहता है पहले अपनी नीड्स पूरी कर लो. बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स, और एंड के ऊपर क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सबसे टॉप ऑफ द पिरामिड में, है ना. एक इंसान अपने आप को फाइनली वो करना चाहता है, उसके अंदर ना गिविंग बैक कहते हैं ना, पहले आपने अपने आप को इतना भर लिया, अपने आप को इतना भर लिया, इसके बाद क्या होगा, जो भरेगा वो बाहर ही तो जाएगा. Now where you're going to give that. If you are full of gratitude and magics and abundance, you are going to give magics and abundance wherever you go. So good, thank you. But I think firstly it's very important, सब अपने अपने पेट पहले भर ले, ताकि जब आपका पेट भरा होगा ना, तभी आप आराम से किसी और को भी दे पाओगे. ठीक है. थैंक यू everyone for being here. Really, thank you so much. Thank you everyone. Tara ma'am had raised her hand. Just check if she wants to share something. Hanji ma'am, would you like to? गुड इवनिंग मैम. Good evening. मैम एक्चुअली मेरी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल रहा है स्टार्टिंग से, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी कोई ऐसी शक्ति थी जिसने हमेशा मेरा साथ दिया. अभी मेरा ये सपना था कि मैं टीचर बनूं, लेकिन उस वक्त मैम मेरी कोई कंडीशन नहीं थी, मेरी एजुकेशन नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरा ये सपना कभी साकार नहीं होगा. बट मेरी कंडीशंस मुझे अलाउ करती रही आगे से आगे, और मैंने बीएड भी किया, मैंने एमए भी किया, और धीरे धीरे जैसे कोशिश करती रही, तो जैसा मैं चाहती थी वैसा होता रहा. और अभी भी मेरी एक अभिलाषा है, मेरी अभी भी इच्छा है कि मैं एक बहुत अच्छी टीचर बनूं, बच्चे मुझसे सेटिस्फाइड हो, जो मैं पढ़ाऊंगा उनके काम आए. तो मैम जैसा मैं सोच रही हूँ अभी तक वैसा हो रहा है, और आगे भी होगा, ऐसी मेरी आशा है. एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर मोटिवेट अस. थैंक यू मैम. थैंक यू तारा मैम. आपके सारे सपने हैं ना, जो भी आपके डिजायर्स है, ये तो बुक ही इतनी बढ़िया है ना. व्हाटएवर यू वांट इन योर करियर, राइट इट डाउन, सर्च करते रहो. एंड मैम गरिमा मैम ने जो हमें बुक दी थी, वो बुक मैंने भी थोड़ी पढ़ी, और उसके बाद मेरे ब्रदर, मेरे घर के जितने भी मेंबर्स थे, उन्होंने भी उसे पढ़ा, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्हें मोटिवेशन मिला कि रियल, इट इज रियल. तो वो भी उस बुक को पढ़ रहे हैं अभी. Okay, Thank you, Garima ma'am, for Thank you. sending physical copies to everybody. Thank you, Garima ma'am. Thank you. Thank you for sharing this. But can I just respond to you, Tara ma'am, in this? अभी मुझे एकदम याद आया कि मैंने so Annie की जो मदर हैं, उनका नाम है आशमीन,
And a few days ago, I had the opportunity of meeting them both in Delhi. So you know what she had shared was very interesting. So she said कि कोई भी अगर ये बोले कि मैजिक बुक पढ़ी है हमने, तो मतलब वो बिल्कुल गलत बोल रहा है. तो you know everybody was surprised कि अरे you know how is that? Because they said कि magic book is actually to be lived. And it's all through actions, all through exercise, all through assignments, because there's nothing to really read. I mean, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो आपको हमें या लोगों को ना पता हो. We are all very wise, we are all very intelligent, we are all, you know, very learned. So everybody knows everything, but the real magic is about experiencing it by doing the exercise and implementing it day after day. और कई चीजें करते करते छूट भी जाती हैं, जैसे कि यू नो एनी वाज मेंशनिंग कि कितनी बारी करा है, बट फिर भी कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस होता है हर बार करते हुए ये यू नो असाइनमेंट. यस मैम. सो द रियल थिंग इज आप लोग जिनसे भी शेयर कर रहे हैं उनको बोले कि पढ़े ना इसको साथ में करें हमारे. जी मैम, जी मैम. वन थिंग मोर मैम कि हमने देखा है कि लोग फिजिकली रूप से बहुत बीमार हो जाते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमारा वर्क हमें अलाउ ही नहीं करता है बीमार होने के लिए. मैंने तो ये फील किया है कि मुझे शायद ही कभी हॉस्पिटल जाने का मौका पड़ा हो, और मैं आगे भी नहीं चाहूंगी कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि मुझे टाइम नहीं है और मैं ऐसा सोचती भी नहीं हूँ. मत बोलो जो नहीं चाहिए. नो मैम, ये गॉड गिफ्ट की बात है. जैसे आपने भी हार्ट टचिंग की बात की, तो हमारा हार्ट हमारा बहुत साथ दे रहा है, वैसे ही मेरी बॉडी से मुझे बिलीव है कि वो हमेशा मेरा साथ दे. इसके लिए मैं गॉड को बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ मैम. Yes, very good. बस यही बोलो कि मेरी बॉडी मेरा साथ दे रही है, उसके आगे पीछे की लाइंस मत ऐड करो कि यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ. But thank you Tara, thank you for being here. Thank you Garam Mama. Somebody was asking about the book. You can buy it from Amazon. ठीक है, you can buy the book from Amazon, the magic book, Hindi, English, जो आपको अच्छी लगे, you can buy it. Okay, so thank you everyone for being in this journey, and see you all. Have a beautiful day. Thank you.